Welcome to Vanik Smart Class. So today we will discuss some questions of RI main questions. RI questions also RI exam is coming, main exam is coming, and also notification again come out for the RI post. So for that exam it will be helpful. So let us discuss few questions of RI. Question number 1 देखो कौन दिखाई जी the per kg price of sugar increases by 16% due to which the total expenditure on sugar of a family is increased by 100 by 3%. Find the percentage increase approximate to the nearest integer in consumption of sugar of the family. It is a percentage question. तो आपको कोई केमते अप्रोच करि पारे मैंने ला केमते हमें शॉर्ट रे करूचे बेसिक क्वेश्चन तो समस्त करि परिबे बट again ako ame normally kari pariba successive lagi pariba but sometimes successive also time taking way तो हमें successive को avoid करी हम जदी again normal method करिबा that is sometimes easy way तो बतन देखो एटा क्वेश्चंस का हम normal method कले सहज हो so successive पकई परिबा क्वेश्चन को जी the per kg price of sugar increases by 16% तो price बढ़ी गला 16% due to which the total expenditure on sugar of family is increased by 100 by 3% तक 16 वोल्ट by 3% पाई परिबा तो increase in consumption of sugar पदरछ तो consumption of sugar यदि हम भाग करिबा ताले हम ए फॉर्मूला पकई परिबा x plus y plus xy by 100 and that is equal to resultant. It is price, it is consumption, it is resultant. Resultant दिया ही कितने ना increase by 16 by 100 by 3%. इटा resultant दिया ही and price दिया ही 16%. तो obviously you can find the y. तो value of y will be 16 plus y plus 16 into y by 100 that is equal to 100 by 3 तो सॉल्व कर ले 4 4 जार 425 जार 25y plus 4y 29y तो 29y by 25 so that is equal to 100 by 3 minus 16 so 3 48 तो 52 by 3 हो तो y रो वैल्यू would be क्रॉस मल्टीप्लाई कर देले 52 into 25 by 29 into 3 इतनी परसेंटेज है जी सो दैट विल बी 25 दुने 50 25 50 125 5 130 सो 1300 by 3 27 3 दुने 6 7 8 87% सो अप्रोक्सीमेटली 87 into 8710 10 minus 7 ala 3 and 12 minus 8 ala 4 430 4 जब जीवो 4 स्टाम 32 5 जब approximately 15%. So option is C, right? तो अदरवाइज सक्सेसिव लगे परिबा तो 100 by 3% टाकू that is 16 whole 33 whole 1 by 3% करि परिबा that is equal to 1 by 3 16% फ्रैक्शन करि परिबा कते 16 by 100 4 by 25 ताले 25 थिला that is 29 हला तो कंजम्पशन केते हबो so that expenditures that is 3 थिला that is 4 हबो तो डिवाइड करि परिबा बट इमेज मध्ये करि परिबा. Next question is question number 2. Ratio of age of A and B after 18 years will be 8:9 respectively. The present age of B is 80% more than age of A 10 years ago. Find the ratio of their ages after 6 years. तो एज प्रॉब्लम को हमें
x पकी करि परिबा but without x also you can solve it. So let us see without x यदि हम solve करिया ताले what can be the concept. Ratio of ages of A and B after 18 years will be 8:9. So ratio of ages of A and B after 18 years will be 8:9. Like A is to B. First ratio is 8:9, and this is after 18 years plus 18 years. Next को जी present age of B is 80% more than age of A. 80% वाला 4/5, तो more माने 9/5. तो माने B होगा 9 part and A of 5 part. This is 9 part, it is 5 part. एटा केबे present age of B, एटा now, and 10 years ago of A, it is -10. बदन दुटा रेशियो कंपेयर करी A and B 18 वर्ष पर रेशियो 8:9. बर्तमान अगेन रेशियो is A and B. B रो नाउ दिया छि and A रो दैट इज 10 वर्ष एगो दिया छि. ताले व्हाट इज द गैप बिटवीन 18 वर्ष हेन्स एंड 10 वर्ष एगो, दैट इज 28 रेशियो. एटा 18 वर्ष हेन्स एंड नाउ को असला रे दैट इज 18 डिफरेंस 20 व्हाट. तो क्रॉस प्रोडक्ट पकई पारिबी. तो 8 9 72 माइनस 45, 72 पार्ट माइनस 45 पार्ट, दैट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करि पारिबी 28 * 9, 9 * 72, 7 9 दिन 18, 18 7 25 माइनस 18 5 90. तो डिफरेंस वाला 12 - 5 वाला 7, and that is 6 - 4 वाला 2, 27 पार्ट. यदि वे 2 - 0 2, 25 - 9, that is 16. तो 1 पार्ट वैल्यू बाय 27. 9 3 9 के 9, लास्ट टाइम 72 308. 1 पार्ट वाला 6. तो हमें ए रो पाई जिबा, बी रो पाई जिबा. तो एला 848 and B के तब ताले 954. एटा को वर्ष एज पाइलो आफ्टर 18 years. Find the ratio of their ages after 6 years. 18 वर्ष पर एज ला 48. सो आफ्टर 6 years तन 12 माइनस करे पड़िबो. ताले 48 - 12 बाय 54 - 12. ये वाला रेशियो. 8 - 2 वाला 6, 4 - 1 वाला 3 36, 4 - 2 वाला 2, 5 - 1 वाला 4 42. 6 रे कर दियो 636, 642. रेशियो वाला 6:7. दैट्स ऑप्शन नंबर डी. अदरवाइज एक्स पकी करि परिबा बट बेटर हबो क्रॉस प्रोडक्ट. तो केमने हमें शॉर्ट सॉल्व कले तो खाली क्रॉस प्रोडक्ट पके देलो. तो 80 पार्ट इक्वल टू 162, 1 पार्ट पाइबो, 8 पार्ट पाइबो, 9 पार्ट पाइबो. देन फाइंड व्हाटएवर द एजेस ऑफ एगो और हेंस. 6 वर्ष पर पचार 18 वर्ष पर दिया तो माइनस 12 कले तो 6 वर्ष एज राम पाइबा. तो रेशियो हम इजीली पाई जाय परिबो. ओके, so let us see next question. Question number 3. In a bag there are coins of rupees 2, rupees 25 paisa and 50 paisa in the ratio 4:5 is 2:5:3. Wrong setting. Coins of rupees 1, first is rupees 1, comma rupees 2, 25 paisa and 50 paisa. Rupees 1 छाड़ दिया इसे. तो ये वाला right answer, right questions. In a bag there are coins of rupees 1, rupees 2, 25 paisa and 50 paisa in the ratio 4:2:5:3. So as per the question, rupees 1, rupees 2, 25 पैसा, 50 पैसा, जार नंबर दिया 4:2:5:3.
तो ये ला नंबर रेशियो दिया हिच ई नंबर रेशियो इज 4:2:5:3 ताको हमें कन्वर्ट करि परिबा दैट इज वैल्यू को बिकॉज़ वैल्यू इज गिवन 172 तो वैल्यू 172 ताले ताको वैल्यू रे कन्वर्ट करे पड़िबो ताले नंबर इफ दिस इज नंबर रेशियो ताले वैल्यू रेशियो वुड बी 4 into 1 ala 4 2 into 2 ala 4 5 into 25 पैसा 125 पैसा तक रुपीज कन्वर्ट करिबा 1.25 एंड 50 पैसा into 3 1.5 रुपीज सब रुपीज रे कन्वर्ट कले देन वैल्यू रे डिवाइड करि परिबा तो वैल्यू रेशियो वाला 4:1.25 is to 1.5 बतन डिवाइड करिवो 172 रे डिवाइड करिया बिकॉज़ टोटल सम इज गिवन 172 तला को मिसई दे सब जाको 4 पार्ट प्लस 4 पार्ट प्लस 1.25 पार्ट प्लस 1.5 पार्ट मिसी के तब 4 8 9 10 10.75 पार्ट इट इज गिवन 172 ताले 1 पार्ट वैल्यू केता हो ना 172 by 10.75 so that is equal to 172 into 100 by 1075 ताको कैंसिल करले केता आसीबो 25 रे कर दो जी 25 100 25 3 75 25 काटले 25 4 जा 43 काटले 4 4 3 12 4 आसीबो तो 4 into 4 the answer is coming 16 तो 16 numbers value one part जदी 16 हला तले प्रत्येक 16 अछि तले ये 16 into 3 and ये 16 into 5 this is 16 into 2 and this is 16 into 4 what question को बदरची find the difference between the number of rupees 1 coins and 50 paisa coins rupees 1 हला 4 part and that is 3 part difference is 1 part so 1 part equal 16 already बाहर जाईची the answer is coming 16 तो option is first option ये so directly you cannot divide number to value तो हम number को value रे convert करिया then value को value divide करे then you can get the answer the answer is coming 16 numbers difference next question जो है question number 4 again ratio proportion let us see a fruit seller has some apples some it is a fruit seller has some apples mangoes and guavas number of apples is 1/5 of the total number of fruits number of mangoes is 1/4 of the remaining number of fruits the number of guavas is 24 more than number of apples and mangoes together so find the total number of fruits x पके करि परिया बट हम जदि अवॉइड करिबा x को ताले आंसर क्विक पाइबा हमें अगेन रेशियो पकेबा बिकॉज़ इट इज अ पार्ट ऑफ रेशियो प्रोपोर्शन जदि हमें दैट इज रेशियो रे सॉल्व करिबा विदाउट x then question is easily solve करि परिबा so let us see how this question can be solved easily तो फर्स्ट कहि जी number of apples is 1/5 of the total number of fruits 1/5 what 1/5 दीजी और दीची 1/4 ताले 5 into 4 एलसीएम नै जाउची लेट 20 कर दोची लेट टोटल फ्रूट्स will be 20 कर दोची let total fruits that is equal to 20 part नहीं जीवा because one part value हम जानिने तो one part value पाई जीवा हमें 20 रे मल्टीप्लाई करि परिया so let total number of fruits that is 20 part so first को जी 1/5 of the total number of fruits are that is apples तला apple संख्या कितना बदले 20 part or 1/5 that is 4 part second number of mangoes is 1/4 of the remaining number of fruits mangoes 1/4 of remaining कितना हुआ 20 part minus 4 20 part minus 4 16 part तो 16 part or 1/4 that is 4 part again mangoes ala 4 part and the number of guavas that is 24 more than number of apples and mangoes apples plus mangoes रो 24 अधिका अछि तले के लिख परिबी 8 part plus 24 येला that is respective तीनटा को fruits रो that is values in part तला हम पचरची what is the total number of fruits and 20 part value तले कोई परिबी तीनटा को मिसई देले that sum will be 20 part
ताले सम केते हिजो ताले 4 पार्ट प्लस 4 पार्ट 8 पार्ट प्लस 8 पार्ट 16 पार्ट तो 16 पार्ट प्लस 24 जदी हला 20 पार्ट सेपट नै गेले 4 पार्ट र वैल्यू 24 ताले 1 पार्ट वैल्यू हला 6 ताले टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स हला 20 into 6 and that is equal to 120. The option is first option. So right answer 120. So without x हम अवॉइड करि परिबा तो 1 पार्ट वैल्यू बाहर करी आंसर बाहर कर दे परिबा. Next question जवा क्वेश्चन नंबर 5. One student is telling that, may I get the schedule of the online class? If you are a regular student, then I think schedule will be given to you. If you are not regular, then you can contact the mentors of that particular that is batch. तो batch रो mentor थिवो तो mentor को तुम contact करिवो ताले that is जानि परिवो कोडी problem अछि. But if you are regular students, then that is schedule must be given. Right. So next question, question number 5. 700 ml of mixture contains 80% more milk than water in it. So find the difference between quantity of milk and water in the mixture. Again, ratio proportion. 700 of mixture contains 80% more milk. 80% first वाला 4/5. So more means plus कर दो, that is 9/5. Then water. So milk यदि 9 part हो, water हो 5 part. So let's go first. 9:5. This milk is to water. Volume वाला 700 ml. Find the difference between quantity of milk and water in the mixture. Difference is 2 part. Sorry, difference is 4 part. तो 4 पार्ट कितने पाई परिबा ऑलरेडी 14 पार्ट दिया ही तो 14 पार्ट दिया ही 700 ml तो 1 पार्ट वैल्यू इक्वल टू 700 ml by 14 14 70 50 ml and 4 part का difference 200 ml. So answer is option C. बहुत इजीली पाई परिबा रेशियो प्रोपोर्शन एंड आल्सो मिक्सचर्स रा कंटेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 6. Right. Question number 6. So A is 40% more efficient than B, while C is 40% less efficient than B. From efficiency questions. So A is 40% more efficient than B. So first write the efficiency ratio. So A by B, first efficiency ratio is given 40% 2/5 or 7/5. And B, C is 40% less efficient than B. So C by B ratio दिया है 40% less 2/5 then 3/5. So what is A is to B is to C? A is to B is to C. Efficiency ratio B B समान अच्छी देखो दीटा ratio compare करी परिबा B B समान अच्छी तो A is to B is to C 7 is to 5 is to 3 is the efficiency ratio. Now come to question. Question goes A, B and C can complete a piece of work in 35 days. যদি A plus B plus C मिसिकरी that is complete करिवे 35 days रे तो amount of work केते तो work amount is 7 5 से 12 3 15 15 into 35 15 5 75 15 3 45 7 52 तो ये वाला amount of work 525 unit. Now A and B together worked 8 for 40 days. A plus B 40 days रे A plus B केते करथिबे
40 days A plus B worked. तो A plus B रो एफिशिएंसी चला 7 5 12 तो 12 into 40 0 12 और 40 480 यूनिट तो रिमेनिंग काम केते तो रिमेनिंग वर्क माइनस कर दियो तो रिमेनिंग वर्क इक्वल टू 5 12 8 गले 4 दैट इज 45 यूनिट्स तल ताकू की करियो वर्तमान C alone can complete it. C efficiency 4. So C can do it 45 by 3. That is equal to 15 days. The answer is coming. Option C is the right answer. Very good. One student answer it is. The answer is coming 15. Okay, very good. Vibhuti, right. So next question is question number that is 7. Okay, let us see. These are very good questions. So how many students can answer it? The average cost price of article A and B is rupees 175. If article A and B are sold at a profit of 20% and loss of 30% respectively, then overall loss in the transaction is rupees 30. So find the cost price of article X. तो बिना कैलकुलेशन करि परिबा क्वेश्चंस नले x पकेबो इक्वेशन आसीबो तो इक्वेशन को अवॉइड करि परिबा तो बिना x रे सॉल्व करि परिबा so given the average cost price of article A and B is 175 ताले सम पाई जबा A plus B रो cost price 175 into 2 350 Article A and B sold profit of 20%. 20% profit decrease and B 30% loss decrease. So that overall loss is loss of 30. Loss 30 rupees. Then what is the value of X? Cost price of article A. A or B should be A. Right. It is A. Okay, let us see. Mina equation is solve kari pariba. So that is the tricks required here. So 20% profit for A and 30% loss for B. जदि A रो पचार B रो जीवी तले जदि दीटा को 30% loss रे बिक्री थांदा ये भी 30% loss and this is also 30% loss. तले overall loss पाई थांदा 350 रो 30%. तो 10% ला 35 into 3 3 पंजा 15 3 3 9 के 10 105 टका loss ही थांदा पर loss है 30 तले difference केता आसी तो 105 को 30 माइनस कर दियो तो माइनस कले 5 माइनस 0 इज 5 10 माइनस 75 डिफरेंस काहे आसला बिकॉज़ एडा होची 20% प्रॉफिट बिक्री जी बट हम 30% लॉस रे मानि छे सो डिफरेंस वाला 50% ताले 50% ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 75 ताले एर दाम हो 75 इनटू दैट इज आंसर दैट्स ऑप्शन इज फर्स्ट ऑप्शन इज आंसर Question data wrong. Wrong kahin hobo? No, it is correct. No wrong. Question is right. Data is correct. Question is coming out. A la 50, B hobo remaining that is 100 taka. Remaining 200 taka. B ro value 200 taka. B amu pacharni. Amu A pacharichi. So value of A equal to 150. Question is right. Right. 150. Very good. Now it is coming out.
So in this process, it will go, so it will be easy, otherwise you can make the equation. So equation kari paribo, to avoid the equation, then you can get the answer. Next question, question number 7. Again, this question also you can solve it directly without any concept. Formula not required. So directly you can find out. A man borrowed rupees 50,000 at simple interest. If 10% per annum for a bank, immediately he lent this amount to his friend at compound interest of 10% per annum compounded annually. So find the total profit earned by the man at the end of 3 years. Se anuchi simple interest re and se invest kurchi compound interest re 8% saman achi, 10% saman achi and principal saman achi, but time given 3 years. Time 3 years. So anuchi SI re and invest kurchi compound interest re. So what is the profit? Profit means compound interest minus simple interest. So हम जानते हैं time 3 years. Time 3 years है तो CA compound interest will be compound interest is 3A plus 3B plus C. 3A is the SI. 3B plus C is the extra profit. So profit will be 3B plus C. What is 3B plus C? That is the answer. 3B plus C is the answer. Again, time 3 years, compound interest for 3 years equal to 3A plus 3B plus C. 3A is the SI and 3B plus C is the profit because SI danichi, SI interest dabo and compound interest profit, that is tara profit dabo. 3B plus C bhakari pariba. So that is equal to प्रिंसिपल दिया है कहते हैं 5,000 50,000 तो प्रिंसिपल यदि 50,000 और 8% 10% ताले ये किताबो ना 50,000 10% 5,000 बी किताबो 5,000 10% 500 एंड सी किताबो 5,000 10% दैट इज इक्वल टू 50 तो हम 3b प्लस इधर कर तो प्रॉफिट इक्वल टू 3 into 500 plus 50. The answer will be 1550. So is the answer. The option is B is the answer. Very good. 1550. तो खाली भाग कर दबो 3B plus C. So 3A is the SI. तो SI से पेमेंट करिवो तो हम दरकार प्रॉफिट तो प्रॉफिट है 3B plus C. That means difference between C and SI. So directly you can say it is a question from difference of C and SI. Right. Next question, question number 9. Okay. Question number 9. Ram is 4 times as fast as Sam and Sam is thrice as fast as Shiv. Distance covered by Shiv in 3.5 hours will be covered by Ram in how much time? Distance covered, if distance is constant, हम जानते हैं proportionality, if distance is constant, तो speed is inversely varies to time. Distance constant है speed is inversely varies to time. Again use किया proportionality. तो Ram 4 times speed माने speed, fast माने speed. Ram by Sam, the speed ratio वाला that is 4:1 and Sam is thrice as fast as Shiv. Sam by Shiv 3:1. So speed ratio Ram is to Sam is to Shiv. कितने जी उधर है 12 3 1. The speed ratio la bar is to 3:1, then convert to time ratio. Inverse proportion. So time ratio 1/12. तो इंटीग्रल कर दोची फ्रैक्शन कर दे परी एलसीएम वाला 12 डिवाइड कर दोची तो 1:4:3. Sorry. One is to bar by 3 4:2 1 by bar that is bar. तो ये वाला टाइम रेशियो. तो स्पीड रेशियो थला bar is to 3:1
So time ratio वाला 1/12, 1/3, 1/1 ताको इंटरवल कले 1:4:12. now जनक टाइम दिया so distance covered by ship 12 part दिया so 12 part हम दिया 3.5 hours. So what is the distance covered same time required for that is ram. So ram ro time हला 1 part. So 12 part जो 3.5 ताले 1 part value होबो 3.5/12 hours. तब इंटीग्रल कर दियो so that is equal to 35/120 एतिक आवर मिनिट अच्छी देखा कौन अच्छी तो 5 से काटले 5 दुने 10 5 चौक 20 7 into 60 कर दो that is 6 चौक 24 14 60 2 दुने 4 2 5 10 तो 35/2 मिनट 35/2 मिनट तो 17.5 मिनट इज आंसर. The option is third option C. Because speed is inversely varies to time. So speed ratio दिया so that is inverse कर दले time ratio पाइबा. Similarly time थिले हम inverse कर ले speed ratio पाइबा. So right answer is that is 17.5. Next questions number 10. So read the question first. Number 10. A and B are two friends who play a game of tossing a coin. Coin is tossed 3 times. A wins if all the tosses gives same result. Otherwise, B wins the game. Find the probability of A winning the game. That means same toss हेले A win करिवो. The different toss होगा then B win करिवो. But condition is given that A must win this game. And here condition वाला coin is tossed 3 times and A wins all the calculated. टिकट देख लो আসলো তারপরে দেখিলো দিয়ে হ্যাঙ্গে গেল Yes. Okay. Number 10. A and B are two friends who play a game of tossing a coin. ताले जदि A wins if all the tosses give same result. तामाने either win ही परिवो or loss ही परिवो. तामाने coin toss करची तीनटा को head ही परिवो head और tail. प्रत्येक चांस इज 1/2 तो 1/2 to the power 3 ये भी 1/2 to the power 3 that's why A wins data केस एडिशन कर दबो so total cases probability of winning the game so that is equal to 1/8 plus 1/8 that is equal to 2/8 that is 1/4 is the answer right option D. तो तीनटा केस रे हमको विन करे पड़िबो तो ए बी दैट इज हेड सेकंड बी हेड थर्ड बी हेड सिमिलरली फर्स्ट केस टॉस हे पारे दैट इज टेल हे पारे दैट्स आंसर इज कमिंग ऑप्शन डी राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11.
how many numbers are there in between 100 and 1000 such that exactly one of their digits is 3 if repetition is not allowed? Counting of numbers, permutation. How many numbers, but counting of numbers हम state करी परिबा, permutation लगिया दरकार पड़िबे नेटी हम खाली cases भाग करे पड़िबो. How many numbers are there in between 100 and 1000 such that exactly one of their digits is 3? Exactly माने one digit. तो one digit 3 रहइबो. So that's why 100 to 1000 means it must be a 3-digit number. So it is a 3-digit number so that any places re 3 rahebo exactly. So 3 can be in 100 place, 3 can be 1000, that is in 10 place, 3 can be in its unit place. So out of these 3 places, any places re that is 3 rahi paribo, and how many numbers are there? So first case number case 1. Jadi 300 place rahebo. So only one wedge, and 10 place will be 9 wedge, and unit place will be 8 wedge because repetition not allowed. So 8 into 9 into 1, so total number of cases numbers will be 72. Hela gote case, case number 1. If 3 is in 100 place. Second case, the 3 kame kariba 10 place re, it is 3 kariba. चले 100 place can be arranged. It is 3 only one way it habo, and 3 asibani 0 asibani, so this will be 8 ways and this will be 8 ways because 80 jo digit asiba thik asibani 3 भी asibani again 8 ways, repetition not allowed. So 8 into 1 into 8, total is coming 64 numbers. Yela second case. And third case, similarly, it is the 3 hour, only one wedge. This will be 0 asibani 1 3 asibani, it will be 8 wedge. It will be 8 wedge. So 8 into 8 1, that is also 64 wedge. Any possibility with possibility nahi. So exactly 3 will come. 3 can come in 100 place, 3 can come in 10 place, 3 can come in place. So total number cases addition कर दवा. तो 4 से 8 2 10, 6 से 12 के 13, 13 7 20, 200. Total 200 numbers will be there. That's why option is second option B. So next question is question number 12. Question is, if the 5-digit number 117XY it have, again I amend it XY. If the 5-digit number 117XY is divisible by 3, 7 and 11, then what is the value of X plus Y? 5-digit number अच्छी 117 XY, and this is divisible by 3, 7, 11. तब X plus Y पचरिच. What is the sum of X plus Y? Again number system बहुत easily हम पाइए परिवा divisibility rule. तो 117XY is divisible by फर्स्ट देखो 3 जी हबो काना 7 लॉजिक तो हमें करि परिबा बट टाइम लागि पारे 11 भी लॉजिक बहुत वे जी परिबो काना माइनस करे पड़िबो पर 3 रो फर्स्ट लॉजिक काना 3 लॉजिक कोजी कोन द सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3 ताले 1 plus 1 plus 7 plus x plus 5 must be divisible by 3 तो 7 1 8 1 9 ये तो divisible by 3 ही जाउछ ताने x plus y must be divisible by 3 ताले sum of x plus y for condition for 3 would be what 0 एल हबो 3 एल हबो 6 एल हबो 9 एल हबो ये चारटा सम रो जे कोन सी गोटे सम सैटिस्फाई करे डिविजिबल बाय 3 फर्स्ट देखिया जदि 3 बार की सैटिस्फाई को जे ऑप्शन अछि तला हमें ताको जदि डबल ऑप्शन आसीबो तला हमें स्किप करी 7 रो करी 11 डी कंडीशन बगैया फर्स्ट देखो ऑप्शन डबल अछि की तो 0 नहीं 3 भी नहीं 6 भी नहीं ने 9 गोटे ऑप्शन अछि दैट्स ऑप्शन मस्ट बी सी दैट इज द राइट आंसर तो पूरा हमें 11 को 7 को बजा दरकार पड़िबा हम देखिया जोटा को हमें डायरेक्टली आंसर पाइबा ताको हम फोकस करबा तो डायरेक्टली हमें 3 द्वारा फास्ट फोकस करो 3 लॉजिक हला सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3 तो x plus y रो सम मस्ट बी आइदर 0 एला डिजिट करना एटा ऑलरेडी
डिविजिबल बाय 3 9 हो जाउची तो x plus y should be 0 हले भी डिविजिबल बाय 3 हबो आइदर इंटरवल ऑफ 3 रे बढ़िबो 3 हबो 6 हबो 9 हबो तो आउट ऑफ दिस फोर ऑप्शंस ओनली वन ऑप्शन इज अवेलेबल दैट्स व्हाई आंसर मस्ट बी C नेक्स्ट वन टू इज होम and he takes 8 hours if he travel 160 kilometer by train plus remaining distance by car तो जो तलाओ 760 to 160 माइनस कर देले 600 किलोमीटर बाय कार सो टोटल टाइम नौची 8 घंटा सेकेंड इक्वेशन he takes 12 minutes more if he travels 240 किलोमीटर by train plus 240 माइनस कर ले 520 by car to 8 hours 12 minutes. So ये ला इक्वेशन दिस ताले व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड द कार रेस्पेक्टिवली जे ऑप्शन दिया है ऑप्शन पकड़ देले भी आंसर आसी जाई परियो तो जोटा को दैट इज सपोज एटा होची ट्रेन जे ऑप्शन दीटा ऑप्शन सम टाइम गोटे थाए तो जब हम गोटाई थिबो ताले हम लाइक दिस करिपा बट दीटा का ऑप्शन दिया है तो डायरेक्टली यू कैन फाइंड दिस आंसर ऑप्शन को पकई जाओ कोड सैटिस्फाई करूची ताले 80 100 ले 2 घंटा एटी 100 ले 6 घंटा 814 घंटा हबन सेटा 100 ले 1.6 एंड 120 180 120 80 ओके हम डिराइव करो ताला सो डेरिवेशन लाइक दिस हबो तो जो गुडा को मोर टाइम नोची यानी मोर डिस्टेंस सेट नोची 12 मिनिट मोर तारे एठी 160 किलोमीटर 240 किलोमीटर मोर जोडा मोर जाउ सेटा मोर जोडा कम जाइछ ताले कहि परिबी ट्रेन रे यदि 814 80 किलोमीटर मोर बाय ट्रेन गला बाय ट्रेन सो टाइम नोची 12 मिनिट मोर ताले यदि 600 किलोमीटर मोर जाइथांता बाय ट्रेन 600 किलोमीटर मोर बाय ट्रेन जाइथांता 760 किलोमीटर राइट ठीक अछि ताले 600 किलोमीटर यदि मोर बाय ट्रेन जाइथांता ताले टाइम केते अधिक निथांता ताले 12 मिनिट बाय 80 इनटू 600 किलोमीटर एती मिनिट अधिक नहीं था तामना काटले केते आसी नब्बे मिनिट अधिक नहीं था सो 90 मिनिट मीन्स 1.5 आवर्स 1.5 आवर्स ताने 8 घंटा रो 1.5 पर अधिक नहीं था 8 घंटा प्लस 1.5 दैट इज इक्वल टू 9 आवर 5 9.5 आवर नहीं था ताले यदि टोटल 760 किलोमीटर 9.5 नोची बाय ट्रेन ताले स्पीड ऑफ ट्रेन पाई जो तो स्पीड ऑफ ट्रेन दैट इज इक्वल टू 760 बाय 18 19 बाय 2 19 बाय 2 19 14 76 40 पूरे काटले 20 0 सारे काटले 2 सारे काटले 15 पूरे काटले 6 1590 1.5 hour 9.5 hour right nothing 18 19 by 2 hours so 760 kilometer by 19 by 2 40 by 2 20 speed of train less us
सॉरी 80 राइट ठीक अच्छे स्पीड ऑफ ट्रेन के दैट इज 760 बाय 19/2 ऊपर 2 पड़ेगा 19 40 इंटू 2 80 किलोमीटर पर आवर तो गोटे ऑप्शन सैटिस्फाई करुच्ची दैट्स व्हाई फर्स्ट लास्ट स्पीड ऑफ ट्रेन 80 किलोमीटर पर आवर तो रिमेनिंग दैट इज 100 किलोमीटर पर आवर तो आंसर विल बी ऑप्शन ए तो अदरवाइज जब हमको दीटा ऑप्शन दिया है तालो दीटा ऑप्शन पकड़ले मते सैटिस्फाई करूची हला एडी 6 2 8 घंटा आसी जाउची ऑप्शन ए आसी जाउची तो बेटर हो जदी कोना क्वेश्चंस रे समटाइम्स गोटे ऑप्शन थाए तो गोटे ऑप्शन थिले देन यू हैव टू सॉल्व बाय दिस शॉर्टकट मेथड सॉल्व करले यू कैन गेट द आंसर दैट्स आंसर इज कमिंग फर्स्ट ऑप्शन ए 80 and 100 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 The bar graph below shows the number of people who buy different vegetables, potatoes, tomatoes, lady fingers, brinjals, and onion from a market. It is also show the per kg rate of these vegetables. Study the graph carefully and answer the questions. Okay. Question कौन कहूँ जी? Now first is potato, number of people who buy different vegetables, and second होची who buy different vegetables. Second the rate per kg. So it is rate per kg, and it is persons buying. Okay. Question number 3, find total number of people who buy potato and onion. Potato and onion. Potato वाला कहते हैं 75, onion 80, 5 8 7 15 155 and is how much percentage less than total number of people who buy tomato, ladyfinger and brinjal. Tomato वाला 60, ब्रिंजल 55, लेडी फिंगर 45, 5 5 10 4 के 5 5 10 10 16 60 तो कितने लेस हो ताले 5 बाय 160 इन 100 10 कैंसिल 4 कटले 2 कटले 8 5 10 तो 25 बाय 8 आंसर वुड बी एट 324 what option अच्छी 3.125%. That's option is third option C. Next question number 16. The number of boys and girls in a class increases by 20% and 5% respectively, and the difference of the number of again mistakes 20% and 25%. Make it 25%. 20% and 25% respectively, and the difference of the number of girls and boys boys in the class is increased from 15 to 20, right? The initial difference 15 thila, now become 20. So find the total number of students. That means boys and girls. Total number of students. The first equation is telling 20% बढ़िला. तो initially suppose boys thile that is x नहीं जाई परिबा and girls thile y नहीं जाई परिबा. तो प्रथम दीजी that is girls अधिका सुंदी. So because first the difference of the number of girls and the boys in the class increased. तब दीटा केसेस रे girls अधिका सुंदी. तो girls जदी y ने भी and boys जदी x ने भी. तो first equation अला y minus x that is equal to 15. Right. Second equation जदी boys बढ़ले 20%, 20 हला 1/5, then 6/5, and girls allow that is 25% 1/4, so 5/4, like 5y/4 minus and 6x/5. So second equation is coming 20, 15 root 20, right? 15 root 20, correct. कल दीटा इक्वेशन हम सॉल्व करले x y पाई जेबा
अरे 20 मल्टीप्लाई कर दोची बेटर हम अरे 20 कर दोची अरे 20 कर दोची अरे 20 कर दोची 400 ये कटि गला 5 ये कटि जीव 4 ताले ये गला 25y माइनस 24x दैट इज इक्वल टू 400 तो y टा काट देबी अरे 25 मल्टीप्लाई कर दोची माइनस कर दे पारि माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो जीव तो गला 25x माइनस 25x प्लस 24x माइनस x सो दैट इज इक्वल टू 25 इंटू 15 के 25 50 125 25 के 25 35 375 तो 375 माइनस 400 वाला कहते हैं माइनस 25 ताले x र वैल्यू पाई गले 25 गोटे इक्वेशन पकाई दियो एटी पकाई दोची ताले y केते बदले 25 प्लस 15 वाला 40 तो x वाला 25 y वाला 40 देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स विल बी x plus चालीस 15 हेले दैट इज 25 25 15 40 ठीक है 40 प्लस 25 65 आंसर अगेन चेक द आंसर number of boys and girls in a class increases by 20%. So boys 20% बढ़चंदी इक्वेशन भूल अछि सो लाइक दिस हम इक्वेशन करि परिबा प्रथम इक्वेशन y minus x that is equal to 15 इति boys बढ़चंदी 20% तो 6 by 5 हे जो boys 6 by 5 and girls increases 25% 5 by 4 ताले 5 y by 4 minus 6 x by 5 that is equal to 20 ठीक थिला ओडीए into 40 25y माइनस 24x 40 आधे 25 मल्टीप्लाई करा गला माइनस करा गला प्लस माइनस राइट कटि जो माइनस 25x प्लस 24x x आस राइट दैट इज इक्वल टू 25 50 125 25 के 25 35 30 75 ठीक अच्छे ताले x इज इक्वल टू 25 राइट तो x वैल्यू पकलेटी y पाई जिबा 25 प्लस 15 40 ठीक अच्छे number of boys and girls यदि initially हमें that is y minus x नेले that difference 15 थिला and बर्तमान that is boys बढ़ी गले 20% 20% जदि हला that is 6 by 5 पे जो 6x by 5 पे जो and 25% girls बढ़ी ले तो 5 by 4 तो 5y by 4 so that becomes difference is what 20 25y प्लस 24 माइनस 24x दैट इज इक्वल टू 400 x 25 y 40 सैटिस्फाई करूछ और सम आसी x प्लस y सो दैट इज इक्वल टू 65%.
तो मे बी सम दैट इज परसेंटेज एपट सब थाई पारे जदि ये 25% से 20% ताले दैट इज इंटरचेंज ही पारे तो क्वेश्चन कैलकुलेशन ठीक अछि सो लेट अस सी कैलकुलेशन ठीक अछि राइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 17 If rupees 450 becomes rupees 494 in 4 years with a certain rate of simple interest, are the rate of simple interest increased by 1%, what will the simple interest of rupees for the same sum in same period of time? 450 टंका थिला and that become 494 in 4 years, certain rate of simple interest. तो रेट परसेंट भाग दे परिबा में आर द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज बाय 1%, सो विदाउट फाइंडिंग वर्ष करि परिबा ताले यदि 1% बढ़िबो ताले 4 वर्ष रे 4% बढ़िबो ताले हम करि परिबा 495 प्लस 450 रो खाली 4% ऐड कर दियो 450 रो 4% 1% होला 4.5 तो 4 5 20 4 16 17 18 टका बढ़ी जिवो तो 8 5 14 13 9 के 10 के 11 4 के 5 तो 513 टंका दैट इज एक्स्ट्रा आसीबो ताले टोटल गोजी व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट रुपीस फॉर द सेम सम इन सेम पीरियड ऑफ टाइम टोटल सिंपल इंटरेस्ट केते आसीबो एटी सिंपल इंटरेस्ट केते थिला ना दैट इज 45 इट इज 18 तो दैट इज आंसर अब 45 प्लस 18 8 5 13 4 के 5 63 is the answer तो ऑप्शन इज बी राइट सो विदाउट फाइंडिंग रेट परसेंट हम करि परिबा रेट परसेंट नवार कर मध्ये सॉल्व करि परिबा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 the bar graph below shows the number of like the same bar graph number of people by different vegetables rate पर दिया छी क्वेश्चन आसो all the people who bought tomato took 4 kg each tomato 4 kg each and all the people who bought brinjal took 2 kg each so find the total amount of money paid by all the people who bought tomato and brinjal so tomato that is 4 kg each tomato किंतु 60 तो 60 into 4 and tomato दाम केता अछि that is 45 40 एटा आसीबो केते 50 55 आछ 55 नियो 55 प्लस सिमिलरली ब्रिंजल 2 kg तो ब्रिंजल वाला केते दैट इज I think data is not sufficient so middle raj तने बोलो कैलकुलेशंस so middle raj so middle तो like this हम करि परिबा from data all the people who bought tomato 4 kg so tomato आनचंदी that is 60 जण 60 into 4 and each tomato दाम हला that is 55 50 रु 60 55 right plus and brinjal anle that is 65 into brinjal ro दाम हला 20 टंका brinjal 2 kg एतिर दाम बदरची सो एडिशन कर so that is equal to 4 5 20 4 5 20 2 22 into 60 0 0 6 12 6 12 13 14 प्लस तो ये 40 तो 40 से मल्टीप्लाई करो 0 5 20 6 24 2 26 तो डबल 0 6 2 8 4 2 6 1 6 8 double 0 तो टमाटो अच्छी 60 into LCM and HF
for two numbers are 150 and 5 respectively. If sum of the numbers is 55, then find the larger number. So larger number पे हम बाहर करी परिबा तो हम जानते हैं LCM and HCF सब HCF रो फैक्टर LCM सब HCF फैक्टर तो 5 into A हम लिख परिबा तो 5 जदि HCF अछि ताले 5 into A plus 5 into B लगन देख पुनी कोन तो HCF is a factor that is LCM रे तला हम LCM नियो फर्स्ट HCF दिया 5 टू नंबर करि परिबा 5A and 5B so तांकर LCM हबो that is equal to 5AB तो 5AB रे वैल्यू हम दिया केते and that is equal to 55 150 ताले A into B so that is equal to 30 कोन कोन हे परिबो 1 into 30 हे परिबो 5 into 6 हे परिबो ताले 5 and 6 नबा सम दिया 55 ताले एटा हिजो 25 एटा हिजो 30 ताले 30 plus 25 55 satisfy करूछ that's why this pair is possible तो मोडे नंबर वाला 25 और नंबर 30 so find the larger number that option is B option 30 is the answer next question जबा 20 if the cost price of 18 apples is equal to selling price of 15 apples then what will be the profit in selling 20 apples if the cost price of each apple is rupees 80 हम जानते रेशियो को दे परिबा cost price of 18 apples it is equal to selling price of 15 apples ताले cost price by selling price so that is equal to 15 by 18 30 छोटा करि परिबा 15 318 and profit in selling 20 apples cost price of each apple 80 तो 5 part जदि ला 80 ताले 1 part ला 16 ताले ला 96 ताले गोटे apple रे profit ला केते ना 16 टका तो find 20 apples दाम केताबो ताले into 20 कर दियो तो 16 into 20 ला 320 is the answer तो option is C is the answer next question jiba question number that is 21 two cycles starts from a house with a speed of 24 km per hour at an interval of 15 minutes with how much speed the woman coming from the opposite direction towards the house has to travel to meet the cycles at an interval of 10 minutes तो एठी हला से ट्रैवल करूछ प्रति 15 मिनट इंटरवल टू साइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम दिस प्रति 15 मिनट इंटरवल किंतु with a speed of 24 km per hour cycle speed reach with how much speed that is the woman coming from the opposite direction adu asibo towards the house has to travel the mid cycles interval of 10 minutes जदि एठी मीट करूची 10 मिनट रे ताले ये भी 10 मिनट जदि हबो ताले एठो मते 10 मिनट हबो साइकिल पहुंच जाबे ताले ए डिस्टेंस नबो केते 5 मिनट डिस्टेंस कांस्टेंट हे गेला तो डिस्टेंस कांस्टेंट हेले स्पीड इज इनवर्सली वैरीज टू टाइम but time is inversely varies to speed so time is जदि 5 by 10 आला तो speed ratio केता बदले 10 by 5 but that is 2:1 2 part दिया है speed 26 1 part लगते 12 तो option is C is the answer time speed distance concept the answer is coming 12 km per hour the speed of the woman next question is right so these are the questions we discussed today and memory based questions so questions are from arithmetic and also some questions from DI and LCM and HCF so thank you all of you